Hello friends, welcome to Abhipedia. My name is Manish and in this video series we are discussing the multiple choice questions on public administration and development. So this is the 8th video in the series. तो अगर आपने बाकी videos नहीं देखी हैं, do subscribe to the channel and you will find all these videos on this channel. Also, press the bell icon so that you receive the notifications of all these videos as and when we post them. So this video series is specifically for ESIC exam, the Employee State Insurance Corporation exam, which is for the post of the Deputy Director. In that exam, there is a specific area for public administration and development, and in this video series, we are trying to explore the different areas of public administration and development. So let's get started. Question number 1. The term federation has been used in the Indian Constitution in which article? कुछ ऐसे important provisions Constitution की जो public administration से related हैं, उनके कुछ articles आपको पता होने चाहिए. So, in which article is the term federation mentioned? A. Article 373, B. Article 280, C. Article 90 और D. Nowhere. इसका correct answer है nowhere. The term federation is not mentioned anywhere in the Constitution. Right? Although India is a federation, India has federalism as one of its basic structures, but the word is not mentioned anywhere out of these articles. So where is the word federal mentioned in the Constitution? It is just a principle that comes out of the division of powers between the center and the state. So federation as such कहीं भी mentioned नहीं है. So D is your correct answer here. Question number 2. टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है. द चार्ज्ड एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज व्हाट? ए. सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, बी. नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ राज्यसभा, सी. नॉट सबमिटेड फॉर द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और डी. नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट. जो एक्सपेंडिचर है वो दो तरह का होता है. ए. एक्सपेंडिचर मेड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया and D. expenditure charged upon the consolidated fund of India. दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड मीन्स कि उसके ऊपर वोटिंग होती है हर बार पार्लियामेंट में, जबकि हर साल बजट पास होता है. दूसरा होता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, जिसके ऊपर पार्लियामेंट में वोट नहीं होती है. एंड दिस इंक्लूड्स दैट एक्सपेंडिचर विच हैज टू बी डन लाइक द सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ the constitutional authorities like President, Prime Minister, Ministers, Judges of High Court, Supreme Court, CAG, etc. So all these are a part of the expenditure charged upon the consolidated fund of India. So it is not voted upon every time in the parliament. Question number 3. Which article of the Constitution of India dealt with the nomination of Anglo-Indian community in the state legislative assembly? See, यहाँ पे word जो dealt यूज किया गया है, यहाँ पे कोई error नहीं है. ये deals नहीं है, ये dealt ही है because it is in the past tense, because now the reservation for Anglo-Indian community has been abolished in Lok Sabha as well as in the state legislative assemblies. तो पहले इनके लिए 2 सीट्स लोकसभा में और 1 सीट हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व्ड होती थी, बट अब वो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद abolish कर दी गई हैं. After 104th amendment, now no longer are Anglo-Indians provided reservation either in the Lok Sabha or in the state legislative assembly. और states के लिए ये जो provision थी, it was under Article 333 of the Constitution. But now it no longer exists, so it was in the past. Question number 4. The principal function of directorates in state government. देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज. इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज, लाइन एजेंसी बेसिकली इज अ फ्रंट लाइन एजेंसी जो कि चीज़ों को इंप्लीमेंट करती है, पब्लिक डीलिंग करती है. स्टाफ एजेंसी इज वर्किंग एट द बैक. तो प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डायरेक्टोरेट, नाउ डायरेक्टोरेट इज अ line agency, it works at the forefront. So what is the principal function of a directorate? Undertake policy implementation, render auxiliary services, facilitate policy formulation or to promote inter-agency cooperation and coordination. देखिए इनमें से 3 काम ऐसे हैं जो कि बैक एंड पे रह के किए जाते हैं एज अ स्टाफ सपोर्ट फंक्शन. एक तो टू रेंडर ऑक्सिलरी सर्विसेज,
to facilitate policy formulation and to promote interagency cooperation and coordination. ये तीनों काम बैक एंड पे किए जाते हैं और फ्रंट एंड पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो डायरेक्टोरेट का फंक्शन होता है टू अंडरटेक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. Question number 5. The district treasury comes under the control of whom? सेंट्रल लेवल पे ट्रेजरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, स्टेट लेवल की ट्रेजरी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ट्रेजरी है वो किसके कंट्रोल में आती है? क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीसी के कंट्रोल में होती है, क्या डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर भी कोई होता है, या फिर वो चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट का होता है उसके कंट्रोल में होती है? So logically, if we talk about this, there should be the third level of administration, and that is here the district collector. It is the district collector who heads the district treasury. कई बार यहाँ पर आपको लग सकता है कि local government institution के हाथ में होता है या district planning board के हाथ में होता है. No, at the district level, it is the DC or the district collector who heads the district treasury. Question number 6. The minister-civil servant relationship in India emerged as a result of which of these? थोड़ा सा ये constitution making की तरफ जा रहे हैं. The evolution of the constitution through different laws and legislations. तो आपको थोड़ी-थोड़ी इन सब की provisions पता होनी चाहिए. Minister-civil servant relation कहाँ से बनना शुरू हुआ इंडिया में? A. Government of India Act 1935. B. Montagu-Chelmsford Reforms 1919. C. Indian Constitution 1950. और D. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मॉन्टेगू शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919. यहाँ से मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप बनना शुरू हुआ. डायरकी जो थी प्रोविंसेस में आई, सब्जेक्ट्स डिवाइड हुए और मिनिस्टर्स को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाने लगी, एंड देयर द रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सर्वेंट्स एंड मिनिस्टर्स स्टार्टेड टू प्रॉस्पर. क्वेश्चन नंबर 7. Who among the following, now this is a typical question from the administrative thought, who among the following says that public administration includes the operations of only the executive branch of the government? Right? So different types of viewpoints were there regarding public administration, regarding the nature and scope of public administration. So according to Luther Gulick, it is only the executive branch of the administration or the government where public administration comes into picture. Does not deal with legislature, does not deal with judiciary. This was the viewpoint of Luther Gulick. तो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, उसी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न्ड है, बाकी दोनों ऑर्गन से नहीं. क्वेश्चन नंबर 8. हु रोट द बुक टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव? सो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव. ये बुक किसने लिखी थी? ए. फ्रैंक मैरिनी, बी. ड्वाइट वॉल्डो, सी. C.J. चार्ल्सवर्थ और डी. J.M. फिफनर. Again a factual question it is. The answer is A. Frank Marini. A. Frank Marini was the writer. So some important conferences, some important books, some important statements of administrative thinkers you should be aware of. Question number 9, terminology से related है, administrative terminology. Job loading. What is the meaning of job loading? A. Shifting of an employee from one job to another. B. Deliberate upgrading of responsibilities, scope and challenges. C. Making the job more interesting. Or D. None of the above. जॉब लोडिंग का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी पे कोई इंसान काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, उसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप, चैलेंजेस सबको बढ़ा देना, उसको ज़्यादा लोड कर देना विद ऑल दीज अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दैट इज व्हाट जॉब लोडिंग इज. सो बी, deliberate upgrading of responsibility, scope and challenge is the meaning of job loading. And finally, question number 10. The theory of prismatic society in public administration is based on which model? Prismatic society का एक मॉडल दिया था, वो किस चीज़ पे बेस था? A. Study of public services in developed and developing countries. क्या उसको कंपेयर करेंगे, उसको प्रिज्मेटिक सोसाइटी बोलते हैं. B. Institutional comparison of public administration in developed countries. Do we compare different types of institutions in developed countries with each other? Or C.
structural functional analysis of public administration in developing countries, और D, historical studies of public administration in different societies. तो चारों ही काफ़ी likely option लगते हैं, लेकिन इसका correct answer है C, structural functional analysis of public administration in developing countries. Developing countries में public administration का structure और उनके functions को analyze करना is prismatic society model. So C is your correct answer. Right? So these were some important multiple choice questions on public administration and development. If you haven't watched the other videos, do subscribe to the channel, and you can find all these videos on our channel. Also given in the link, given in the description below, there are links to our portal abhipedia.abhimanyu.com. वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर खुद को फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करके ये वाले PDFs भी डाउनलोड कर सकते हैं. So do check out abhipedia.abhimanyu.com, and we will be coming back with a lot more videos. So stay tuned, share this with as many friends as you can, and all the best. See you in the next class.